You're watching Truth versus Hype. Strong words by the Supreme Court this week on forced religious conversions. If conversions is found to be correct and true, the court said, it's a very serious issue. It may ultimately affect national security. The centre, the court said, should make their stand clear on what further steps they can take to curb such forced conversion. It's an order that's being seen as the strongest recent endorsement of a long-running right-wing claim of large-scale forced conversions in India. This in response to a petition by an advocate, Ashwini Upadhyay, who argued that fraudulent religious conversion is rampant and asked for an anti-conversion central law. Now, to be clear, conversions aren't illegal in India. Article 25 of our Constitution, which deals with freedom of religion, says that the people have freedom of conscience and free to profess, practice and even propagate their religion. Also, forced conversions is already illegal across India, and while there is no central anti-conversion law, 11 states have brought anti-conversion laws. Now, there's little doubt that conversions are a reality in India and that there well may be individual instances of wrongful or forced conversions. But claims of large-scale forcible conversions of the kind suggested by the petition and a persistent Hindutva bogey has always been high on rhetoric but low on facts. We examined Mr. Upadhyay's 65-page petition and found it riddled with unsubstantiated, unsourced claims, sweeping generalizations, repeatedly conflating conversions per se with forcible conversions, and at least one example of a report that has been found to be outright fake news. The petition begins, for instance, with sweeping generalizations like these. Not even one district, it says, is free of religious conversions by hook and crook. Mass religious conversions of SC/ST is on a steep rise. Conversions are primarily rooted in a surge of international conversion campaigns, it says. And if such conversions aren't checked, Hindus would soon become a minority. It's worth noting here that the last available census data shows that India's Christian population has in fact dropped slightly from 2.34% to 2.3% between 2001 and 2011. Mr. Upadhyay's petition goes on to cite 15 specific examples in an attempt to bolster his point, based almost entirely on media reports from right-wing sources or unsourced claims. Of the 15, only 2 examples are cited of large-scale conversions. These pertain to claims about mass conversions in 2010 by 2 international Christian missions based in the US, the Houston-based Central India Christian Mission and the Missouri-based Joyce Meyer Ministries, which the petition claims separately converted about 21,000 people in India in 2010. In neither case, though, does the petition provide any source of this information or how this amounts to forcible conversions. The petition also contains 4 individual examples of students in Christian schools being forced, in some cases violently, to convert, starting with a case from earlier this year of Lavanya, a Hindu student from a missionary school in Tamil Nadu who committed suicide and who, in one of the videos recorded before her death, claimed that she was tortured by school authorities, possibly because she refused to convert. Now, media reports of the Lavanya suicide have painted a more complex picture of the case, with the emergence of multiple videos mentioning conversion in only one video, with the police saying that she had been facing problems at home as well. Of the other 3 of these examples, 2 are from Madhya Pradesh from last year, of children being forcibly converted in schools in Vidisha and Raisen districts respectively. In both cases, media reports have found glaring holes in the claims of forcible conversion, finding that in the Vidisha case, the children were already Christian. The petition also cites 6 examples of Hindu students in Christian schools being made to remove their religious markers or being punished for wearing them. For instance, a missionary school in Telangana refusing to allow a student wearing a religious mala to enter the school. This is from 2021. Or of how girls were not allowed in class because they had henna on their hands at a convent school in Gujarat. But in none of these examples is there any evidence supplied as to how this amounts to forced conversion. One example cited
in the petition actually might be fake news. This viral video from October last year of a student being beaten by a teacher in Tamil Nadu, the petition said that news reports had claimed that this was because he was wearing a rudraksh and sandalwood on his forehead. But the video found the print online journal is actually of a teacher called Subramanyam, a Hindu man who was thrashing a student for skipping class. Now in July this year, the Delhi High Court, before whom Mr. Upadhyay had filed a similar petition, pulled him up for a lack of credible evidence. The High Court said there is not a single instance of forced conversion is given in your, that is Upadhyay's petition. It also said that conversion to any religion is a person's constitutional right, and if someone is forced to convert, that's different. But to convert is a person's prerogative. We put this to Mr. Upadhyay in an interview, and this is what happened. We advise you to watch till the end. Thank you very much indeed, Ashwini ji, for joining us. Now, you filed the petition, court has passed an order, but the important question here that we wanted to understand is that when one talks about forcible conversion and the fact that it's such a big risk, what is the evidence, what is the proof that there is in fact large-scale forcible conversion? नहीं, कन्वर्जन का प्रूफ तो आप ऐसे देख लो, यू गूगल द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, आपको ये पता चलेगा कि बिफोर 200 ईसा से 200 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ थी और 17वीं शताब्दी में भी इंडिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ थी। दूसरा इसका एविडेंस ये है 6th और 7th सेंचुरी में हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ थी। 7th century. 7th century. We are going back to 7th century. Yes, I am coming. What I am giving something is 7th century में इंडिया की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी और आप अगर देखेंगे तो 17th सेंचुरी तक लगातार वो कम होते होते 14 करोड़ पे आ गई है। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है, भारत की पॉपुलेशन घटी है। अच्छा, 40 से 39, 38, 25, 27 ऐसे करके आप डेमोग्राफी ऑफ इंडिया करके पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आप ढूंढोगे। Yeah, but respectfully, we are in year 2022. So we are talking of, I am presuming you are talking of the current situation. Where is the current evidence of large-scale forcible conversion? Yeah. मैंने ये PIL तब फाइल किया जब तमिलनाडु में लावण्या ने सुसाइड किया। लावण्या ने सुसाइड किया, उसके केस में लीपापोती हो रही थी, तो इसलिए मैंने मेरी पहली प्रेयर ये थी कि इस पूरे मामले को NIA या CBI को दिया जाए। दैट वाज माय फर्स्ट प्रेयर। सेकंड प्रेयर मैंने उसमें स्टेट वाइज डेटा दिए हैं कि किस तरीके से हिंदू लगातार खत्म हुआ पिछले 75 ईयर्स में। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप में कि हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, ओनली 2%। Right? No, but Ashwini ji, again the question. Complete. Don't let me complete. You have your question. Let me complete. नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचा हुआ है, मिजोरम में केवल 2% बचा हुआ है, मेघालय में केवल 11% बचा हुआ है, कश्मीर में केवल 2% बचा हुआ है। आप स्टेट वाइज देखें तो ऐसा आपको पर डे वीडियोस मिलेंगे जहां पे रोज चंगाई सभा हो रही है और किस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं। कई चीजें आप जोड़ रहे हैं। लेट्स जस्ट स्टिक टू योर पॉइंट अबाउट द फैक्ट दैट पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डेटा यू आर साइटिंग। So first of all, if there is some change in demographic data, one community is coming down, how is that proof of forcible conversion? Because conversion, as you know, is legal under the law. We can all convert. Your plea is against forcible. Yes. So how is a shift in demographics proof of forcible conversion? No, I have given the data. I have given the some fact कि कहाँ पे किस तरीके की चंगाई सभा हो रही है। चंगाई सभा मीनिंग कन्वर्जन? चंगाई सभा मीन्स कहते हैं आ जाओ, आपका कैंसर ठीक कर देंगे, आपका घुटना ठीक कर देंगे, आपकी नपुंसकता ठीक कर देंगे, आपका बाजपन ठीक कर देंगे। तो ऐसी चीजों में जिस रिलीजन के हेड खुद व्हील चेयर पे चलते हैं, नहीं जस्ट मिनट, जिनके घुटने का इलाज वो खुद नहीं कर पा रहे, वो गरीबों को बुला के उनका घुटना ठीक कर रहे। तो इसलिए मैंने, और इसी तरीके से कन्वर्जन है, ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, अंधविश्वास है, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ पे ब्लैक मैजिक के खिलाफ कानून बनाया। I know, but again, black magic is a different point. Conversion, again, we're coming back to forcible conversion. Now, if one looks at some of the examples जो आपने petition में, like you said, I've given examples in your petition. You said that there are 2 US-based Christian missions which converted something like 21,000 people in the year 2010. Yes. What is this? Firstly, there is no source for this. What is the source of this information? And again, what is the evidence to suggest forcible conversion? वो एविडेंस मैं कोर्ट में दूंगा, वो आपको थोड़ी दूंगा। वो सारे एविडेंस मैं कोर्ट में दूंगा, वो सारे एविडेंस मैंने गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। बट ये आपका पिटीशन ऑलरेडी कोर्ट में है। नहीं, वो कोर्ट में है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी मेरा है, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी है। आपके पास जो है वो असली नहीं है,
वो मतलब एक कॉपी है, उसके अलावा एडिशनल एफिडेविट भी है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी है। नहीं, आप कह रहे हैं असली नहीं है, ये आपका ये आप ही का कोर्ट में सबमिटेड हुआ पिटीशन है, तो आपने एक कॉपी है, आपको जो दिया है मैंने वो एक कॉपी दिया हुआ है। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट भी है जहां हमने ये बताया है कि फंडिंग का क्या क्या जरिया है, उसमें एफसीआरए की जो फंडिंग आ रही है, किन किन एनजीओज को जा रही है, उसका हवाला दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो आया है पैसा, खाड़ी देशों से आया है, उसमें मैंने कुछ एनजीओज के नाम लिए हैं। जो सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने ये दिया आर्टिकल 14 का वायलेशन। आर्टिकल 14 से इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आज की डेट में यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ है, तो यानी आप गाजियाबाद में कन्वर्जन करोगे तो आप क्राइम हो गया, लेकिन आप इंटर कर जाओ आनंद विहार में दिल्ली के तो कन्वर्जन क्राइम नहीं है। आप अगर नोएडा में कन्वर्जन करते हो, क्राइम है। Conversion is not a crime. Conversion can't be a crime, no sir. You can't confuse forcible conversion and conversion. दोनों अलग-अलग चीजें हैं. Conversion by deceitful conversion, हाँ. by allurement, by intimidation, by using black magic, by using anything. So अगर हम अपने आप खुश होके, मैं किसी किताब को पढ़ के खुश होके अपने आप अगर हो जाता हूँ, it's we have right. So I am again asking you respectfully that all the examples, like I said, I cited these US NGOs. You're saying that this is not correct. You will submit it in court. Now again, you talked about correct, but supporting documents. Supporting documents. Okay. Then you also cited some examples where children were, according to you, forcibly converted in Christian school. Like you mentioned the case of Lavanya, who had committed suicide in Tamil Nadu. Children in convent schools in Madhya Pradesh were forcibly converted, etc. Again, if you've gone into this, because आप individual instances की अब बात कर रहे हैं, इस पे रिपोर्टिंग हुई है, पीपल हैव गॉन इन एंड लुक्ड, जैसे मध्य प्रदेश वाला केस है, उसमें ये पता चला कि वो चिल्ड्रन पहले से ही कन्वर्टेड थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने खुद माना है कि वहाँ फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं है। पूरे देश में कन्वर्जन हो रहा है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वो सारे ट्राइबल बेल्ट्स में कन्वर्जन इज नॉट इलीगल। Conversion means fraudulent conversion. Conversion means converting by intimidation or luring something or स्कूल में एडमिशन देने का वादा करके या हॉस्पिटल में इलाज कराने का वादा करके. But sir, these are all general statements. बोलने को we can make a lot of general statements about a lot of things. But in a court of law, as a lawyer, you know that what matters is what can be proved. NDTV is not court of law. I will prove in Supreme Court. NDTV is not court of law. नहीं, we are not. मैं आपको जितनी बात बताना चाह रहा हूँ उतना बताऊंगा, उसके अलावा थोड़ी बताऊंगा, सारी बात आपको थोड़ी बताऊंगा. आप ही की बातों से हम उठा रहे हैं, मतलब कोई बाहर से नहीं. जैसे आपने कुछ काफी एग्जाम्पल साइट किए हैं कि जहाँ स्कूल्स में बच्चों को अपने हिंदू रिलीजियस जैसे रुद्राक्ष हो गया, ये सारी चीजें हटाने को कही गई. यू गिवन सम 6 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. वी वेंट थ्रू ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. अगेन there is nothing to show that this is forcible conversion. मान लीजिए सही भी है that in some school some child was made to remove a bindi or a rudraksh. How is this proof of forcible conversion? अगर चलो ठीक है मान लेते हैं एनडीटीवी के हिसाब से देश में कन्वर्जन नहीं है ना, तो अगर कन्वर्जन हमने कहा just please imagine we are talking of large scale forcible conversion, which is the allegation or which is the claim you made. We are trying to establish how is that established through your petition. एनडीटीवी और श्रीनिवासन के हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं है. चलो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, ये हम मान लेते हैं. मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कन्वर्जन सर इज लीगल. कन्वर्जन लीगल भी है, हो भी रहा है और होता रहेगा. लार्ज स्केल इलीगल कन्वर्जन, लार्ज स्केल, ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल इंस्टेंसेस नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें गलत होती हैं. लार्ज स्केल इलीगल कन्वर्जन का प्रूफ मैं आपसे रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूँ. सवाल 1 मिनट का होना चाहिए तो जवाब 5 मिनट का. आप सवाल आपका 5 मिनट चल रहा है. आप मेरे को मिसकोट कर रहे हैं. मैं मिसकोट नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ अगर भारत में सब लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आप बत्ती तोड़ने पे, ट्रैफिक वायलेट करने पे आप 10,000 रुपये भी पेनाल्टी कर दो. किसी को खतरा क्यों? किसी को डरना ही नहीं चाहिए. अगर लोग वास्तव में ट्रिपल तलाक नहीं दे रहे थे तो तलाक खिलाफ कितना भी कठोर कानून बना, किसी को डरना ही नहीं चाहिए. तो वास्तव में अगर कन्वर्जन हो नहीं रहा है तो इतनी फड़फड़ाहट क्यों, इतना घबराहट क्यों, इतनी चिंता क्यों? फिर एक सेंट्रल लेवल पे एक्ट आ जाने दीजिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जो हमने बेसिकली क्यों एंटी कन्वर्जन ला. फड़फड़ाहट आप जो कह रहे हैं, घबराहट कहाँ है? घबराहट है बहुत सारे लोगों में. घबराहट आप में नहीं, आप तो कूल फील हो रहे हैं लेकिन है घबराहट. नहीं, मैं सबूत पे हूँ. जैसे आपने लेकिन आपके पिटीशन पे पूछना चाहता हूँ. आपने बल्कि एक आपने खबर उसमें दिया है कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि किसी लड़के को तमिलनाडु के स्कूल में पिटाई हो रही है क्योंकि उसने रुद्राक्ष पहना था. द एलिगेशन वाज कि उसका क्रिश्चियन टीचर था जो उसकी पिटाई कर रहा था. ये खबर निकल के आई है कि ये फेक है. उस वीडियो में वो न क्रिश्चियन टीचर था, न वो कोई कॉन्वेंट स्कूल था, वो एक हिंदू टीचर था जो किसी दलित बच्चे को अनफॉर्चुनेटली पीट रहा था क्योंकि वो स्कूल में लेट आया था. सो
this is actually potentially, I'm just telling you because you submitted this in court as your senior lawyer, that this may actually even be fake news. नहीं, मैंने कहा ना, NDTV के हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं है, किसी तरीके का फ्रॉडलेंट कन्वर्जन नहीं है, न यहाँ पे एनजीओ में कोई फंडिंग हो रही है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, न इस तरीके कोई कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता। सर, हम स्पेसिफिक केसेस के बारे में पूछ रहे हैं जो आपने खुद अपने पेटिशन में मेंशन किया है। मैं तो आपको कह दिया ना, जो मुझे प्रूव करना है मैं कोर्ट में प्रूव करूंगा। अगर कन्वर्जन नहीं है तो आप एजेंडा क्यों चला रहे हो? आप इतने परेशान क्यों? एंटी कन्वर्जन ला आने दो, खत्म बात हो गई। एजेंडा की बात नहीं है सर। एंटी कन्वर्जन ला आने से नेशनल लेवल पे एनडीटीवी को दिक्कत क्यों हो रही है? आपको तो कहना चाहिए भैया कठोर कठोर बनाओ, 10 साल सजा कानून बनाओ, 20 साल सजा कानून बनाओ। कौन होते हैं? हम तो जो खबर है, आप लगातार उसको निगेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसको लगातार आप एजेंडा चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। हम आपके एजेंडा चला रहे हो। आप आपके पेटिशन से ही जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, उससे हम बाहर तो नहीं जा रहे। मैंने आपको क्या कहा? भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। ऐसा नहीं है कि हिंदू नपुंसक हो गए, ऐसा नहीं है हिंदू महिलाओं के बच्चे नहीं पैदा होते, ऐसा नहीं है। ये कन्वर्जन ही इसका बड़ा कारण है, जो लगातार डेमोग्राफी कम हो रही है। नागालैंड में जो हो रही थी पहले, मेघालय हो रही थी, मिजोरम हो रही थी, जो अरुणाचल हो रही थी, जो बाकी जगह हो रही थी, अब वो पूरे देश में हो रही है, यूपी बिहार में भी हो रही है। हमारा जो कंसर्न ये है, आर्टिकल 14 से इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर यूपी के लोगों को कन्वर्जन की प्रोटेक्शन है, एंटी कन्वर्जन की प्रोटेक्शन है, तो दिल्ली के लोगों को भी होना चाहिए। आज की डेट में दिल्ली सबसे कहते नहीं सेफ हेवन बन चुका है। यहाँ पे ये सबसे सुरक्षित। तो दिल्ली की आप बात कर रहे थे, आप एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट में आपने पिटीशन भी फाइल किया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी सिमिलर प्ली पे दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है उस पे कि देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन इज गिवन इन योर पिटीशन। कोर्ट ने कहा हाँ, तो वो हमने पुरानी थी उसको वापस ले लिया, हमने उसमें नए डेवलपमेंट किए उसके बाद। और आपको पता है कोर्ट ने बिल्कुल वैलिड माना, इसीलिए लावण्या की डेथ में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सीबीआई जांच हो रही है ना, तो वेट करिए सीबीआई जांच का, आने दीजिए। क्या दिक्कत है? आप पहले इतना इन्वेस्टिगेशन परेशान हो रहे हैं? मतलब श्रीनिवासन को क्या दिक्कत हो गई? ऐसा क्यों एजेंडा चला रहे भैया? थैंक यू। क्वेश्चन नहीं सर, क्वेश्चन तो ले लीजिए आप, तो क्वेश्चन से। अरे भैया हो गया, आप 10 मिनट से क्वेश्चन कर रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन हो गए। बट एक और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस मेंशन किए हैं पिटीशन में, वो कहाँ से आपने कंपाइल किया है? पिछले 10 मिनट से आप सवाल कर रहे हो। आप केवल एजेंडा चला रहे हो, आपको केवल एजेंडा चला रहे हो, कोई सवाल पूछना नहीं है। आप केवल आप इंटरव्यू से सर वॉकआउट कर रहे हैं। आप फॉरेन फंडेड एनजीओज को बचाना क्यों चाहते हो? मैंने ये कहा है, हवाला के खिलाफ कठोर कानून हो, कन्वर्जन के खिलाफ कठोर कानून हो। अगर वॉकआउट मत करिए ना, सवाल आपके भाई साहब 15 मिनट हो गए, आपको 15 मिनट से आपसे लगातार बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे दूसरी कोर्ट में जाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या एक सवाल उठता है कि ये जो आपकी पूरी लाइन आपने ली है, इज दिस वाकई to do with law or is this coming from some also prejudice? मतलब कहीं ना कहीं आप एंटी माइनॉरिटीज़ तो नहीं आ रहा सामने? यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि नोएडा में कन्वर्जन ऑफेंस है, इलीगल कन्वर्जन, फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन, और दिल्ली में नहीं है। गुड़गांव में कन्वर्जन ऑफेंस है और दिल्ली में नहीं है, तो कंप्लीट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 हो गया। ये आपने कहाँ से, जैसे हमारे वेयर डिड यू, आपने ये आइटम्स कहाँ से कंपाइल किए? लेकिन जो आपने सारी लिस्ट दी है, वेयर हैव यू मैटर ऑफ कंसर्न सर, लाइक वी सेड एटलीस्ट वन इंस्टेंस इज अ क्लियर कट केस ऑफ फेक न्यूज़ दैट हैज बीन साइटेड इन योर पिटीशन। मैं उसको एनडीटीवी फिलहाल नहीं बताने वाला हूं। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू वेरी मच इंडीड सर। Now, Mr. Upadhyay's reluctance to prolong the interview is not surprising. Neither is the factually flimsy petition he's filed at the Supreme Court. The real worry is that this kind of alarmist but unsubstantiated claims has made very real threats and consequences for India's Christians, from threats and intimidation to outright violence. In the middle of last year, as the BJP-led government in Karnataka talked up the dangers of forcible conversion as a prelude to passing one of the most stringent anti-conversion laws in India, a spate of anti-Christian attacks erupted across the country, with Karnataka as the epicenter. The attacking mobs cited forcible conversions as the provocation, with little to no proof that the Christian establishments targeted were conducting forcible conversions. In fact, on a number of cases, the Christian attendees can be seen in viral videos rebutting the claims of forcible conversion.
The trigger for the Karnataka government's law and the violence which ensued was a sensational but unproven claim by a BJP MLA on the floor of the assembly that his mother had been forcibly converted to Christianity. His mother had in fact told the media that she'd converted of her own will after the loss of one of her sons in a car accident some years ago, finding solace in a local church. But the government went ahead anyway and passed the law. When we'd asked Karnataka Chief Minister Bommai about this, this was his response. My MLA's mother was converted forcibly. My MLA's mother was converted forcibly in Chitradurga district, and by alluring her. She denied it. Huh? She denied the fact that she was forcibly converted. That is what I am telling. That's what happening. There was no law. Now there is a law. Now there is a law. Everything but will if be she's controlled. denying it, now see. Then she's saying I converted voluntarily. No, that's what. That is the way they have done it. Now there is a law. Okay. There is a deterrent law. Okay. So we don't want alluring or any force, and that is our stand. Now the worry is that with the Supreme Court order, such claims of forcible conversion, unproven claims, will get a boost. If the centre starts to mull a federal anti-conversion law, will it once again heighten the risks for India's Christian community? The great irony is that Mr. Upadhyay, the petitioner, should know better about the risk of inflammatory rhetoric. He was arrested in August last year and released on bail for reportedly organizing a gathering in Delhi where attendees chanted murderous slogans against Muslims. We were going to ask him about that too, but he was having none of it.